लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ आपका, ताकि एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेटा सेंटर की, राइट। कोई भी डेटा सेंटर हमारा जनरली होता था, है ना, अभी भी होता है ऑन प्रीमिसेस में, बट जन अभी अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लाउड, बट वी विल नॉट गो टुवर्ड्स द क्लाउड साइड। हम बात करेंगे ऑन प्रीमिसेस की। आपका जो भी क्लाइंट था, क्लाइंट को लेट अस सपोज वो कोई एक सर्विस आपकी यूज कर रहा है। एयरपोर्ट की वेबसाइट की भी अभी हम बात कर रहे थे विद कासिम। वही हम ले लेते हैं कि लेट अस से इसको कुछ बुक करना है लुफ्तांजा पे। ओके, लुफ्तांजा की वेबसाइट पे ये जा रहा है एंड ही नीड टू बुक अ टिकट और समथिंग, ही नीड टू गो सम। सबसे पहले क्लाइंट जो है, ये lufthansa.com या वट एवर द वेबसाइट, वो अपने ब्राउजर पे डालेगा एंड नीड नॉट टू टेल, ये रिक्वेस्ट डीएनएस पे जाएगी। इन द डीएनएस देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जो आई होप यू पीपल आर अवेयर अबाउट, कि या पहले रूट रूट। सर्वर पे जाती है, हाँ, देन टॉप लेवल डोमेन पे, सेकेंडरी, टर्शरी, एंड इवेंचुअली वो आपकी जाती है अथॉरिटेटिव सर्वर। और वहां से होता हुआ वो डीएनएस का मैं पॉइंट यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा हूँ, बट लेट अस सपोज ये सारी कहानी हुई, है ना। यहाँ पर जीएसएलवी की भी कहानी आ जाती है, जिसको ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग बोलते हैं। इन एज्योर इट इज एज्योर लोड बैलेंसिंग, है ना। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। लेट अस से डीएनएस की आपकी कहानी होती है एंड इट विल गेट अ आईपी। कोई एक आईपी हम एज अ थ्योरेटिकल मान लेते हैं, 20.1.1.1 इसको मिल गया। ओके, तो सबसे पहले आपका आता है डीएनएस। देन ये आपकी जो रिक्वेस्ट है, फॉर श्योर इसने कोई लिंक लिया होगा, वहां पर मॉडम होगा, मॉडम के बाद आईएसपी का रूटर आता होगा, एंड फिर आईएसपी के कुछ रूटर्स होंगे। तो ये मैं बना देता हूँ आईएसपी जो एक छोटा सा मैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। आईएसपी बैकबोन इसको लिख देता हूँ, ताकि आप लोग समझ पाओ कि हम क्या बात कर रहे हैं। ओके, इसके बाद ये सारी जो चीज है, रिक्वेस्ट आपकी जाती होगी लुफ्थांसा के डाटा सेंटर। ओके, दैट इज अ सेपरेट थिंग, कि वो खुद मैनेज कर रहे हैं, कोई और उनकी तरफ से मैनेज कर रहे हैं, वो उस पे हम नहीं जाते। सबसे पहले जो इनको मिलेगा, वो मिलेगा एक डी डोस सॉल्यूशन। जनरली कंपनीज लगाती हैं, इम्परवा ले लेती हैं या वट एवर, कुछ भी ले लिया, आईपीएस, आईडीएस, डी डोस, कोई भी ले। ओके, उसके बाद यहां से रिक्वेस्ट होती हुई आपकी इंटरनेट राउटर पे जाएगी, जहां पर आप एक्सेस लिस्ट लगा के रखते हो, है ना, बिकॉज आपका नॉन स्टैंडर्ड ट्रैफिक ना है। उसके बाद स्टैंडर्ड जो आपका रहता है, मैं थोड़ा सा उसी तरीके से बता रहा हूँ, इट कैन बी मोर और लेस, है ना, थंब रूल नहीं होता कोई, बट डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट फायरवॉल लगी ही होती है। तो एक फायरवॉल आएगी। फायरवॉल के बाद आपका लगता है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एएसएम अपने केस में, है ना, या मैं बोल देता हूँ लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर के बाद आपके रखे होते हैं सर्वर्स, और वो छोटा सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूँ ओनली फॉर देयर वेबसाइट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो सकता है, बट जनरल मुझे आपको क्योंकि बता रहा है, तो मैं एक जेनरिक सा बना रहा हूँ। आई होप यू ऑल ऑफ यू आर ऑन सेम पेज ओवर हियर। अगर हम इसके बारे में बात करें, ये जो लेयर है डीएनएस लेयर, है ना, जो कि यूडीपी पोर्ट जनरली 53 पे काम करता है, या टीसीपी पे भी काम करता है जब आपका पैकेट बड़ा हो। अगेन डोमेन क्या बोलते हैं उसको, फॉरगेट अबाउट, चलो कोई बात नहीं। बट टीसीपी 53 ऑल्सो गोना यूज्ड, यूडीपी 53 ऑल्सो यूज्ड, लेकिन यहाँ पर भी एन नंबर ऑफ आपके अटैक्स हो सकते हैं। लेयर 3 पर अटैक हो सकते हैं, लेयर 4 पे अटैक हो सकते हैं, लेयर अपर लेयर पे अटैक हो सकते हैं, और लेयर 7 पे अटैक हो सकते हैं। जब हम आज की क्लास की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस गाय। ओके, जो कि यहाँ पर, जो मैंने एएसएम और एलबी की तरह यूज कर रहा हूँ। एएसएम F5 का एक प्रोडक्ट था, ओके, जिसे एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजर बोलते हैं। अब
इसका जो नया नाम है दैट इज एडवांस वेब, है ना। लेकिन जनरली इंटरचेंजेबल है ये दोनों टर्म। लोग इसको एएसएम भी बोल देते हैं और एडवांस वेब भी। यहाँ पर एक टर्म जो आपको याद रखनी है वो है वेफ। आई होप आप लोगों को पता होगा, बट नहीं, मैं एज्यूम करता हूँ नहीं पता है। तो वेफ एक जनरल, आप बड़ी शिप मान लो, जिसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ओके। जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज फायर आपको वेब सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इफ यू हैव हर्ड अबाउट अकामाई, क्लाउड फ्लेयर, है ना, जो ऑन प्रेम डीडोस आपको मिटिगेशन भी देते हैं, और इस तरीके से भी अगर आपको मतलब सॉल्यूशन चाहिए तो दे आर प्रोवाइडिंग यू सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन आल्सो। तो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, बट हाँ, वैफ जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट F5। और F5 का जो वेब सॉल्यूशन है दैट इज नेम्ड एज एडवांस वेब। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन, एनी इशू, प्लीज आस्क। No, sir. Just one question I have. हाँ People बताइए do आप। implement DNS check as well. I heard about. I just read actually on the notes. Basically, DNS security. I don't know what हाँ they do, but basically, हाँ it says like it does the some kind of encryption on the DNS packets and all. हाँ So, if somebody is asking if they need some ports to be open for DNS, so should हाँ। we ask like whether you have implemented DNS check and even after implementing, it will still attacker can make use of this and try to manipulate the packets and all. नहीं नहीं, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन कंप्लीटली। कैन यू रिपीट अगेन, लाइक व्हाट इज योर क्वेश्चन? Yeah, DNS my security. question is DNS security. DNS Yeah, security I heard, DNS yeah. security I heard, but what is the specific question with respect to the DNS security? हाँ मतलब DNS security क्या है? Is it the part of DNS and is it like people even after implementing DNS हाँ security ओके still the ओके, देखो, you डीएनएस know एसईसी डीएनएस एक्ट कहलाता है। दिस इज नेम्ड एज डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन। ओके। डीएनएससेक आपका एक अपने आप में डीएनएस प्रोटोकॉल है, जो कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस क्लास, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हम्म यहाँ पर क्या रहता है, आपके डीएनएस के अंदर ए रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना, इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, ए रिकॉर्ड होते हैं, सी नेम होते हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट ऑफ होते हैं, लेकिन मेनली आपके ये रिकॉर्ड्स होते हैं। अब आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि कोई रोग डेटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट की कैशिंग में ना डाल दे, उसके लिए यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ की, जिसको RRSIG भी बोल देते हैं। इफ यू हैव हर्ड अबाउट, डीएनएस की भी बोल देते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, रिसोर्स रिकॉर्ड के ऊपर एक सिग्नेचर लग जाता है। बिट यू हम्म ट्राई टू अंडरस्टैंड बिट लाइक अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ओके। और हम्म यहाँ पर okay वही आपकी जैसे पब्लिक की होती है, वेरीफाई करती है RRSIG को, है ना, और डेलीगेशन साइनर देखता है कि जो मेरी अथॉरिटेटिव जो सर्वर दिखा रहा है, आइदर उसके पास डीएनएस सिक्योरिटी ये जो है साइनिंग अथॉरिटी वो है भी है या नहीं है, राइट। तो अगेन, हम्म अबाउट योर जोन्स, अबाउट योर क्रिप्टोग्राफिक कीज, ये सारा वैलिडेशन और साइनिंग पिक्चर में आ जाता है। अगेन, इफ आई से, डीएनएस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फंडामेंटल क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी फॉर योर डीएनएस प्रोटोकॉल। और F5 डीएनएस की अगर हम बात करें तो बड़ा पावरफुल प्लेटफॉर्म है विच कैन मैनेज, एसोलेट एंड सिक्योर द डीएनएस इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू आउट, एंड इट कैन इंक्लूड योर implementation ऑफ डीएनएस सिक्योरिटी एज वेल। ओके। तो बट एज आई एम टेलिंग, दैट इज अ सेपरेट, ऑल टुगेदर अ सेपरेट टॉपिक। अच्छा so if this is implemented if like server team if they have implemented this so हम्म। manipulation will not happen. I mean DNS poisoning or cache what viewers you were saying like people cannot manipulate the packets and all or they cannot hack the DNS packets even if they are able to they will not be able to decrypt or decode what is there in the request बिल्कुल। बता देखो, देना डीएनएस कैशे पॉइजनिंग एक अटैक है जहां पर हाँ हाँ मैलिशियस
एक्टर बीच में आ जाता है विच फोर्ज डीएनएस डाटा इनटू अ रॉन्ग डीएनएस रिजोल्वर कैश, है ना। Okay. लेजिटिमेट डोमेन क्या फेक मैलिशियस वेबसाइट पे भेजने को ही मतलब बिट लाइक मैनिपुलेट Basically, करते redirection of I, हैं। राइट राइट hacker राइट राइट। IP and all they do. बट जब मैंने Okay. आपसे बात किया कि देर आर एस आई जी रिकॉर्ड्स विच मीन्स आपका ए रिकॉर्ड, क्वेड ए रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, वट एवर, है ना, आपके जोन पर ही आपकी इंक्रिप्शन आ जाती है विद योर प्राइवेट कीज, राइट। तो अब Okay. कोरस्पॉन्डिंग पब्लिक की के लिए जो डीएनएस पब्लिश कर रहा है उसको वेरीफाई करेगा यूर डेलीगेशन साइनर कि यार पेरेंट जोन इज .com, वो चेक करेगा कि ठीक है हैशिंग ऑफ माय पब्लिक की फॉर माय चाइल्ड जोन इज करेक्ट और नो। Hmm. तो डीएनएस सेक Okay. विल validate the resolver either it is receiving a correct DNS response or no. Okay. 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 Just one question, if you don't mind. Good, good. I'm sorry, I'm asking too many questions. No, This no, that's fine. security, after you implement or server people, they will do the installation or implement this service. So it will work on a different port as well, or it will still be working on the same port like UDP TCP 53, or it will attach. There will be an additional 443 port or something will be required. नहीं नहीं नहीं, इट शुड बी ऑन द यूडीपी पोर्ट 53 ओनली बिकॉज डीएनएस रिक्वेस्ट और क्वेरीज आपकी जो है फास्ट वहीं से जाती है ना, स्टेटलेस रहती है। डीएनएस 53 ठीक पोर्ट है। 50, सॉरी टीसीपी, टीसीपी हम्म, 53 जनरली आपकी, जैसे मैंने आपको बताया लार्ज पैकेट्स जब आपका हो उसमें आता है डीएनएस जोन ट्रांसफर, नाम याद नहीं आ रहा था मुझे, जोन ओके, ट्रांसफर। तो जोन ठीक है। ट्रांसफर के दौरान यू वुड बी एबल टू सी कि टीसीपी पोर्ट 53 भी यूज हो रहा है, बट जनरली all the queries will go through your UDP port 53 UDP until port. unless आप कुछ कस्टमाइजेशन नहीं कर रहे हो in your environment, like ओके। अगर आप पोर्ट कर रहे हो, आई डोंट नो योर इन्वायरमेंट, बट लेट अस सपोज हम्म, यहां से क्वेरी आ रही है 53 की, but you are हम्म, changing on some of the device and internally you are using maybe 8083 whatever, okay, I don't know हम्म। what is the reason, but maybe because of some reason you are using it, it is bit like your netting, जैसे आप आईपी नेटिंग करते हो Port ना, forwarding and all. यू कैन, Yes. हाँ यू कैन हाँ, यूज पोर्ट बेस्ड फॉरवर्डिंग, ओके, और पोर्ट नेटिंग आप उसको उस तरीके से समझना चाहते हो तो लेमैन टर्म वैसे। हाँ, हाँ, ठीक है। ओके। हाँ, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? नो, नो, नथिंग। थैंक समीर, कासिम? सर नो। आई वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर कि जैसे इसमें ये राइट साइड में जो सर्वर्स है हाँ वो हाँ, सर्वर्स या वो एप्लीकेशन डीएनएस भी हो सकता है और हम लोग ओनली डीएनएस को भी सिक्योरिटी और लोड बैलेंस कर सकते हैं क्या ये एनवायरनमेंट में? very good question, but again all the questions are coming with respect to the DNS. but it's all right, let me tell you. देखो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि these are the DNS server one, okay, maybe let us say हम लिनक्स यूज कर रहे हैं and this is DNS server two. now your question is कि इससे पहले हम लोड बैलेंसर लगा सकते हैं क्या? तो द आंसर इज यस, व्हाई नॉट, ओके, आप लगा सकते हैं, बट इज दैट द ऑप्टिमल वे? नो। व्हाई? इससे पहले आपको फायरवॉल भी लगाना पड़ेगा, ओके, देन फायरवॉल का आपका अलग सॉल्यूशन आ जाएगा, आपकी अलग कॉस्ट आ जाएगी। इंस्टेड ऑफ दिस ऑल स्टफ, F5 की अगर मैं बात करूं तो F5 DNS यूज हो जाता है। F5 DNS अपने आप में फायरवॉल की तरह भी काम करता है एंड लोड बैलेंसर की तरह भी काम करता है। तो आपको ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट इवन देन इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग ओल्ड सर्वर्स, आप उसे नहीं हटाना चाह रहे हो, तो आप इसको एज ए नॉन अथॉरिटेटिव सर्वर भी बना सकते हो, जोन ट्रांसफर कर सकते हो यहाँ पर ना, जोन ट्रांसफर जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था, या देर आर एन नंबर ऑफ अदर थिंग्स व्हाट वी कैन डू, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स बिकॉज दिस इज एएसएम क्लास। बट सो वी विल, सर ये F5 तो अथॉरिटेटिव सर डीएनएस के बेस पे काम करता है ना। सॉरी, F5 जो ये है अपना GTM वो तो अथॉरिटेटिव डीएनएस के बेस पे काम करता है। हमेशा नहीं, हमेशा इस केस में जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, तो इट विल बी नॉन अथॉरिटेटिव, ओके। है ना। लेकिन अगर आप वाइड आईपी बना रहे हो
आई डोंट नो इफ यू पीपल आर अवेयर अबाउट दिस टर्म्स या और, वाइड आईपी, यस है आई ना? नो। तो अगर आप बना रहे हो तो तब अथॉरिटेटिव है। लेकिन जैसे मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आपने ओवर द यस, आपके दूसरे जैसे सर्वर से, सी नेम ऐड करवा दिया हमने डीएनएस के अंदर, आप और डेलीगेट, अगर आप डेलीगेट कर रहे हो रिक्वेस्ट फर्दर, है ना, एक आर कैशे यूज कर रहे हो, टी कैशे यूज कर रहे हो, देर आर डिफरेंट कैशे, देन इट इज नॉन अथॉरिटेटिव। ओके, बट हाँ समीर, लेट्स कम टू योर क्वेश्चन। इट कैन, ओके, आइदर इट इज feasible or no, answer is yes. ओके सर, ओके, थैंक यू। Sure, let's go ahead. Okay, अब हम बात करते हैं, वो मैंने एज एन ओवरऑल आपसे बात की थी। अब मैं सारी की सारी पिक्चर हटा देता हूँ वहां से और छोटी सी एक पिक्चर बना लेता हूँ, ओनली फॉर द क्लाइंट, देन फॉर द F5 ASM। ओके, वो सारी की सारी लेयर्स जो है अभी भी है, बट आई डोंट वांट टू शो देम। मैं छोटा सा ये लॉजिकल बना देता हूँ, जस्ट विद रिस्पेक्ट टू द F5 ASM। ओके, आपकी रिक्वेस्ट ASM पर आएगी। सबसे पहले क्लाइंट, अगेन यहाँ पर कुछ आपकी एप्लीकेशन होगी, पोस्ट कर लेते हैं xyz.com। ओके, ये दोनों सर्वर xyz.com पर कर रहे हैं। क्लाइंट xyz.com के लिए जाएगा। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, DNS सर्वर आएगा। क्लाइंट वो वेबसाइट जो है इवेंचुअली, है ना, कैसे भी, मतलब बीच में डीनेटिंग आपकी हो सकती है ऑन द फायरवॉल और मे बी एन डिफरेंट लेयर्स, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे हो। हम बात करते हैं कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट खोली, ये ट्रैफिक कौन सा होगा, HTTP या HTTPS। ओके, बिकॉज F5 ASM वर्क ऑन विच लेयर, लेयर 7। तो आपको ये बात याद रखनी है, F5 ASM वर्क ऑन लेयर 7। तो यहां पर मेरा एक वर्चुअल सर्वर बना होगा। ओके, और वो इवेंचुअली रिक्वेस्ट कहाँ आएंगी, वर्चुअल सर्वर। वर्चुअल सर्वर से मेरी एक सिक्योरिटी पॉलिसी लगी होगी। ओके, ये एक पूरा बॉक्स बना देते हैं, लेकिन लॉजिकली मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, जिसमें LTM को मैं थोड़ा ऊपर दिखा देता हूँ, ASM को नीचे दिखा देता हूँ। अगेन इट इज अ वन बॉक्स ओनली, है ना, लेकिन लॉजिकली मैं थोड़ा सा सेपरेट आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहां से मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले LTM पे जाएगी। LTM देखेगा कि इज देयर एनी सिक्योरिटी पॉलिसी ट्रैफिक इनग्रेस के लिए, फॉर श्योर। आपका देखो, ये VLAN की रूटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर मैं फ्रॉम द स्क्रैच बात करूं, इनग्रेस VLAN की आपकी रूटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। L2 L3 चेक आपका होगा, आर राउटिंग, VLAN टैगिंग, एवरीथिंग शुड बी देयर बिफोर हैंड। और ये सारी चीजें हम अपनी लैब में बनाएंगे भी। मैं थोड़ी देर में अभी आपको अपनी लैब दिखाऊंगा, तो वहां पर हम करेंगे भी। देन एक बार मेरे पास LTM के पास ट्रैफिक आएगा, LTM डिसाइड करेगा हाउ टू हैंडल द रिक्वेस्ट बेस्ड अपॉन योर वर्चुअल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। तो वहां पर आपकी SSL ऑफलोडिंग हो सकता है लगी हो, SNAT लगा हो, आई रूल्स लगे हो, और सिक्योरिटी पॉलिसी लगी। तो अगर SSL डिक्रिप्शन है वहां पर, जो कि होनी भी चाहिए, अदरवाइज आपका ट्रैफिक रीड नहीं कर पाएगा ASM, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, SSL डिक्रिप्शन होगी। तो यहाँ पर SSL ऑफलोडिंग एक सेटिंग होती है। आई होप यू पीपल आर अवेयर, है ना, बिकॉज यू वर टेलिंग मी कि आप सभी को LTM का पता है। तो आई एम एज्यूमिंग SSL ऑफलोडिंग यहाँ पे लगा, तो क्लियर टेक्स्ट आपके पास ट्रैफिक आप आ गया। अब वो क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक कहाँ जाएगा, ASM मॉड्यूल के पास। ओके, अब वो सारा पेलोड जो आपका क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ASM उसको इंस्पेक्ट करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिक्रिप्टेड है ना, रिक्वेस्ट में। तो अब यहाँ पर चेक शुरू होते हैं, एक बिट लाइक आप ये मान लो ACL की तरह, जिसमें रूल्स होते हैं हजारों, और हर एक रूल चेक होता है, राइट। और कहीं भी वो रूल अगर मैच नहीं करता तो ACL उसको ड्रॉप कर देती है। इसी तरीके से यहाँ पर ASM सिक्योरिटी पॉलिसी भी अगर हम उसी तरीके से एज्यूम करें इन अ लेमैन टर्म, तो ASM सिक्योरिटी चेक करेगी, और इट विल चेक, लेट अस सपोज सिग्नेचर चेक करेगी। तो सिग्नेचर में एक छोटी सी मैं जनरल जो सब जानते हैं, SQL इंजेक्शंस वगैरह हमारे होते हैं, या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, या कोई भी मेरे कॉमन अटैक्स है, वो चेक होंगे कि अच्छा ठीक है, आइदर देर इज सम सिग्नेचर मैचिंग ऑन इट, नो, ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे ये चेक करेगी, ठीक है, हम चेक करते हैं एचटीटीपी कॉम्प्लायंस, प्रोटोकॉल कंप्लायंस, मेरे जो हेडर्स है वो वैलिड है या नहीं, मेरा मेथड जो है वो अलाउड है या नहीं, मेरा कंटेंट टाइप है दैट इज ओके और नो, है ना, मेरा रिस्पॉन्स कोड सही है या नहीं, अलाउड है या नहीं। मान लो आपका रिस्पॉन्स कोड 500 आ रहा है और वो अलाउड ही नहीं है, तो इन द रिस्पॉन्स टाइम ये पॉलिसी आपको ब्लॉक कर देगी और आपको एक सपोर्ट आईडी दे देगी। ओके, आई एम एज्यूमिंग दैट यू पीपल आर अवेयर अबाउट सपोर्ट आईडी, इफ नॉट इट्स ऑलराइट, मैं आपको थोड़ी देर में दिखा भी दूंगा, या आज नहीं तो कल जब भी लैब बनेगी मैं दिखा दूंगा। अब ये हो गया, ये भी पास हो गया, ये हो गया, लेटर से ये भी पास हो गया, फिर रिक्वेस्ट चलेगी आगे, देन इट विल सी यूआरएल बेस्ड, है ना, मेरी लेंथ लिमिट सही है या नहीं, डाटा टाइप सही है नहीं, अलाउड कैरेक्टर सही है या नहीं, पैरामीटर्स, फाइल टाइप, है ना, ये सारी चीजें फाइल टाइप। मैं थोड़ा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, एंड आई एम एज्यूमिंग ये बड़ी कॉमन टर्म है, आप लोगों को पता होगी, नहीं पता होगी तो यू कैन स्टॉप मी, आई विल एक्सप्लेन, दैट्स नॉट एन इश्यू। देन इट विल चेक, ये भी चलो पास हो गया, लेट अस अज्यूम ये भी पास हो गया, देन इट विल चेक सेशन कुकी, और मे बी कुकी हाईजैकिंग तो नहीं हो रही है, कुकी टेम्परिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ कुकीज बेस्ड, ये भी पास हो गया। फिर आईपी रेपुटेशन और बोट डिफेंस, इज देयर सम काइंड ऑफ मलिशियस आईपी विच इज कमिंग, या बोट ट्रैफिक, छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये सारी चीजें लेट अस सपोज चेक हो गई, एंड अगेन ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी पॉलिसी कैसे बनाई हुई है उस पर, है ना। लेकिन अगर ये सारी चेक आपके पास हो गए तो इस एएसएम अब डिसीजन लेगा, वो वहां पर ब्लॉक भी कर सकता है, अगर कोई चीज पास नहीं हुई तब ब्लॉक मतलब रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर देगा और एक कस्टमाइज्ड ब्लॉक पेज भेजेगा जिसपे सपोर्ट आईडी करके एक रिक्वेस्ट नंबर होगा, अलार्म भी शो कर सकता है कि ठीक है रिक्वेस्ट तो मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ लेकिन कुछ वॉयलेशन आ रही है, यू नीड टू चेक, और लर्निंग भी वो वहां पर शो करेगा, दैट अगेन समथिंग विच आई विल टॉक अबाउट लेटर ऑन, कि ये किस तरीके से पूरा आपका एएसएम मॉड्यूल काम करता है। बट लेट अस सपोज ये रिक्वेस्ट आपकी पास हो गई, पास होने के बाद अगेन इट विल सेंड ऑन एलटीएम। अब एलटीएम का आपको काम पता ही है, एलटीएम क्या चेक करता है कि ठीक है अब मुझे चेक करना है व्हाट इज द पूल। अब ये मान लेते हैं हम इसके ऊपर पूल 1 लगा हुआ है, पूल 1 के ऊपर सर्वर 1 और सर्वर 2 है। अब क्या चेक होगा, लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग चेक करेगा, ठीक है आइदर माई बोथ ऑफ द लोड सॉरी सर्वर्स आर अप और रनिंग, पहली बात, दूसरा कितना लोड है उनपे। अब डिपेंडिंग अपॉन दैट रिक्वेस्ट मेरी वन ऑफ द सर्वर जाएगी, एंड लेट अस सपोज दिस इज द लकी सर्वर, यहां पर मेरी रिक्वेस्ट आ गई। रिक्वेस्ट यहां आने के बाद काम खत्म नहीं होता है, क्यों, क्योंकि सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा दोबारा यहां पर, जो एलटीएम मॉड्यूल पे जाएगा, एलटीएम फिर भेजेगा एएसएम पे। अब एएसएम फिर चेक करेगा हर एक चीज को, एचटीटीपी रिस्पॉन्स में कोई डाटा लीकेज तो नहीं हो रही है, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सपोज तो नहीं हो रही है, या हेडर बेस्ड वट, हर एक चीज चेक होगी यहाँ पर। उसके बाद ये फिर एलटीएम पर जाएगा, एलटीएम एसएसएल इंक्रिप्शन लगाएगा, एंड देन ट्रैफिक आपका, इग्रेस ट्रैफिक आपका जाएगा, इग्रेस ट्रैफिक के लिए फिर से आपका ये सारा काम जो भी है आपका बैकएंड पे होगा। दिस इज योर, मैं अगर बात करूं ओवरऑल एएसएम ट्रैफिक फ्लो, है ना, एएसएम ट्रैफिक फ्लो की तरह हम इसको देख सकते हैं। आई होप यू पीपल आर on the same page. Any questions? Feel free to ask. Yeah, just one question. This will do for both incoming as well as outgoing traffic, right? बिल्कुल बिल्कुल Or HTTPS, it can be an HTTP, I mean, on the server, and certificate would be there on the F5, I mean, on this ASM, वो right? कैसे भी हो सकता है, it can be वैसे भी HTTPS होगा, on the हाँ, server, ठीक, okay, it can be HTTP also on the server, depends on your setting, आपका क्या compliance है and how you are configuring it. done. Okay. Yes. Kasim, Yes, sir, understood. question? No, sir. No? Okay. Samir, is there any question? No, sir. No, sir. Okay. I can see somebody join now with the name of so Prasad. Yes. Yeah, I just Do got you him. understand? It's all right. Do you understand Hindi? Because मैं हिंदी में ये बैच ले रहा हूँ. Do you understand Hindi? Not much.
Little. Okay. Although I am talking in Hinglish, little bit Hindi, little bit English, but if you confuse somewhere, you can do let me know, and I will translate it for you. Okay. So Yes. I just If it, explained the traffic flow. And one more thing before proceeding, are you aware little bit about F5 ASM? yes, yeah. Good then. We can continue. I worked on F5 LTM and GTM and APM as well, but Mhm. it's been almost 2 years. I haven't touched GTM and APM, but yes, I was Mhm. mostly working on F5 LTM. So It's all. It's all. PMSC, yeah, worked on ASM for this, like blocking some IPs and all, but not much of configuring the policies and all. So just want to know like how the positive security model and negative security model works, and yeah, just want to more know about it. So rather than simply just checking the logs, why it's blocked, and so those L1 tasks I was done on ASM, not on much on ASM. Yeah. Got it. Point taken. Thank you. Okay. Let's proceed further. देखो मैंने अभी आपको बताया कि ASM, Sorry, sir, I was on mute. One second. yeah. So ASM works on which layer? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया. On which 7. layer? 7. Layer 7. Okay. So since it is working on layer 7, आप लोगों को HTTP के बारे में थोड़ा पता होगा. Okay. I will not say कि completely you should be aware, but little bit you should be aware about. Reason is you need to mitigate the violation on some of the protocol, so you should be aware about that protocol. है ना? तो HTTP सबसे पहले you people are aware stateless है, right? Stateless है. Application layer है ना? Layer 7. Then client से जब डाटा जाएगा थ्रू द ब्राउजर टू द सर्वर जाएगा, और बीच में वी शुड हैव सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी which should be layer 7, and that is the reason मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि there should be SSL offloading, है ना? तो SSL offloading will be there. These are the things which I talked about. और यहां पर आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स काइंड ऑफ मॉडल आता है. क्लाइंट कभी भी आपका जब कनेक्शन इनिशिएट करेगा तो अंडरनीथ देयर विल बी अ TCP handshake, the TCP three-way handshake. I hope you people are aware about. There is a SYN packet, then there is a SYN plus ACK packet, and then ACK packet. This is your simply three-way handshake of TCP. Once your TCP handshake is completed, only then the traffic HTTP data will come. Or I will explain about HTTP in a moment. But before that, I need to talk about one more thing. Let us suppose कि आपका कोई भी client आता है, because it will go on the ASM. So you people are aware because everybody aware about LTM. So I am assuming कि you should be aware on the virtual server. First of all, the three-way handshake will happen, and only then your HTTP GET request or HTTP request will come. So I am assuming GET. Who is aware about this GET? What is GET? Anybody? A GET is for getting the request from the server. It's basically from client requesting. And this is known as. Think. This is named as HTTP methods. Methods. Yeah. Methods. You should be aware about it, and the reason is why. क्योंकि by default आपके 2 या 3 ही मेथड अलाउड होते हैं ऑन द ASM, not all. Okay. अगर if you are using maybe put method, I'm just taking an example. By default it is not allowed. So your request will be dropped. By whom? By F5 Advanced WAF, जिसको मैं interchange here. I am just using the name as ASM, but the new name is Advanced WAF as I described earlier. So it will be denied. Now you will see that okay, it was a genuine request. It was not a violation. It is a legitimate request. Why it is getting fall down? Because of methods. Now some people are rely on the suggestions
depending upon the suggestion, learning suggestion, they just allow the request. Let us say if there is nothing coming in the learning suggestion, you should be aware आपको कहाँ जाना है, what is the path, where to amend, what to amend, what would be the result of that amendation. Okay, you should be aware about it. And उसी के लिए आपको थोड़ा HTTP के बारे में पता होना चाहिए. So there are different methods of HTTP, like get method. You people are telling retrieve the data of the web page or whatever your application. You are right. Okay, this is one method. Take some more name. Put is there, post is there, trace is there, delete, update. Thank you. So post is there, put is there. I am taking some very generic name. Delete is there. Okay, there are a lot of options, head options and blah 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 blah. But I will use only this CRUD. Okay, this is an acronym because nowadays everybody is using API. Okay, and in API there is an acronym जो आपको पता होना चाहिए, that is CRUD. CRUD stands for create. आपको जब कुछ क्रिएट करना है तो यू यूज व्हाट मेथड, आइदर यू कैन यूज पोस्ट. ओके, देन रीड के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करते हो जनरली, कैन. देन अपडेट, अपडेट के लिए व्हाट यू यूज, पुट. देन डिलीट, फॉर डिलीट यू यूज डिलीट. सो दीज आर द very common methods of the HTTP which you should be aware of. And during your any of API calls, if you are performing some of the action, then you need to be rethink that either your CRUD operation is there or no, is allowed or no. So it should be allowed on your website. Any question over here? It could mean create, post, update, and delete. Let me. It is create, read, update and delete. तो ये जो आपके पहले अक्षर है ना, इससे आपका बन गया CRUD. ओके, Okay. तो जनरली आप वेबसाइट पे यही करते हो, या तो आप कुछ क्रिएट करोगे, है ना, जैसे आपने अपना फीडबैक लिखा तो दैट इज ऑल्सो क्रिएशन, या यूजर नेम साइन अप कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग समथिंग, है ना. या आप उसको रीड करोगे, फॉर श्योर रीडिंग तो हम हमेशा करते हैं. या आप कुछ अपडेट करोगे, मतलब वो ऑलरेडी है वहां पर कुछ चीज, आप उसको एडिट कर रहे हो, लेट अस सपोज, है ना, तो दैट इज अ. डिलीट मीन्स मे बी समथिंग, सम कमेंट मैं डिलीट करना चाहता हूँ, दैट इज नॉट रेलेवेंट नाउ, you can delete them. Okay, so these are the operations which generally everybody is using. And using API, है ना, अब डिपेंड करता है वो API कॉल्स आप कैसे कर रहे हो, कौन सी लैंग्वेज से जा रही है. वी विल नॉट कम इनटू दैट API साइड करंटली, बट हाँ, ये ऑपरेशंस आपके रहते हैं थ्रू आउट वेन एवर यू गो फॉर द एनी ऑफ द वेबसाइट. और मैं, अब ये बात हो ही रही है तो एक छोटी सी बात और यहाँ पर शुरू कर देते हैं HTTP की, रिलेटेड टू HTTP. लेट अस सपोज मैंने कोई वेबसाइट की, एंड लेट अस से मैंने नेटमिनियन की ही वेबसाइट की, netminion.net. ओके, एक्सेस किया मेरा, यहाँ पर अगर मैं ऊपर चेक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का चीज आती है. व्हाट इज दिस? This is Anyone? okay. Like website is working, and you got the response. This and is it's named as status codes or HTTP status codes, and you are very much right. It means website is okay, request is succeeded. You are absolutely right. Okay, ये कोड आपके इस तरीके के भी हो सकते हैं, 100, 101, 102 bit like, which means it is under the processing, no final response yet produced. Okay, ये कुछ आपके 200 रिलेटेड भी हो सकते हैं, which means success kind of message. Okay, it can be like 3xx, which means like 302, some kind of redirection. तो redirection के वक्त आपका ये आ जाता है जनरली. देन 400 के आप कुछ चेक कर सकते हो, लाइक 404 जनरली हम लोग देखते हैं बैड रिक्वेस्ट होता है, राइट, क्लाइंट साइड एरर. और सम काइंड ऑफ लाइक 500 साइड भी आपका देख सकते हो, विच शोज सर्वर साइड. मैं थोड़ा लिख देता हूँ ताकि यू पीपल, इट इज सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, रीडायरेक्शन.
this is related to the success, this is related to the process, that it is getting processing. Okay, अभी processing आपकी हुई नहीं है, तो it is just processing. So I hope this is also clear to everybody, है ना, कि HTTP status codes आपके हैं. Then एक छोटा सा मतलब बेसिक, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना. एक चीज होती है HTTP, एक चीज होती है HTTPS. Somebody please explain about the same. I know you people are aware, but just HTTP is to plain interact text with each other. and HTTP Sorry? is encrypted. हाँ, HTTP is so plain text and हाँ, HTTPS is encrypted. You need a certificate for that. very good. Thank you. Okay. Now, little bit about the flow of HTTPS, please. Flow in the sense you'll have to install a certificate, and that will be you'll have to purchase the certificate basically, and it be a public certificate, and you either have to install on the server or you'll have to install on the F5 ASM. Client will request and certificate. I believe it will be installed in the client system as well, and traffic will pass through server, and it will pass through ASM, and it will land on the server. बिल्कुल सही. You are right, absolutely right. Thank you. There are two more terms, TLS and SSL, when we used to talk about. What are those? Anybody? Can you repeat? Repeat the question again. Yeah. What is that? What is this SSL and TLS when we talk about TLS HTTPS? is transport layer security, and SSL, I think it's secure socket layer. TLS is advanced version of SSL, I guess. Yeah. Right. It is obsolete. Just for your information, it is obsolete. It does not, they are in the market now. But as I am talking about that, ASM was the earlier name, लेकिन अभी भी हम ASM कह के बुलाते हैं. उसी तरीके से हम SSL कह के बुलाते हैं, but SSL is not there. TLS is there. And let me show you one more thing. If I go Netminion block SSL heads. Okay. I hope मेरी screen आप लोगों को visible है, right? You can see the website. Yes. There is two more things mentioned over here. ये interesting question है, मैंने आपसे पूछा नहीं. Let's ask now. What is the symmetric and asymmetric, keys in the SSL or TLS thing, and what we use? Symmetric is like a same key you're using, and asymmetric is like you have a different keys. Okay. And which we use in case of when you get a certificate from the third party, or maybe आप install करते हैं जैसे a public certificate, वो asymmetric होता है. For example, symmetric is like a VPN. When you have a site-to-site VPN, उसमें I think symmetric key is the same as both the side. If I'm not wrong. Yeah, go ahead, Kasim. मीन एसिमेट्रिक के अंदर ये होता है कि पब्लिक आपकी जो डिक्रिप्ट होनी है ना वो की वो पब्लिक जब वो रिक्वेस्ट चली गई है किसी इसके F5 के या किसी फायरवॉल पे, वो डिक्रिप्ट प्राइवेट की के साथ होगी. इस तरह कोई सीन होता है एसिमेट्रिक के अंदर. डिक्रिप्शन प्राइवेट की और पब्लिक की. Okay. Anybody else? Okay. Let's compare. So you are right, all of you. Symmetric means one session. Asymmetric means two keys. But मेरा थोड़ा question trickier था कि which we use, and answer is both of them. Okay. It depends on which stage we are. So you can read about it, like what is SSL, what is TLS. For sure, TLS has different version. उस पर थोड़ी देर में बात करते हैं. Let's not talk now. Because previous version जैसे vulnerable हो जाते हैं, like your Windows, right? तो Windows आप पहले 98 यूज करते थे, XP यूज करते थे. You are not using those Windows now, right? Now you are upgrading. Similarly, you are upgrading the TLS also. Now let's go ahead and talk about this.
this is a favorite, picture. I used to talk about this picture only whenever I need to talk about, SSL handshake overview. We cannot go in the deep because in the deep it is really a very big topic. But let's talk about the overview. If we check the overview, you can see left hand side there is a client. Okay, so let us assume this is a client, and this client is initiating a request to a server. So let us assume this is a server. Okay, now what happened is when your request come, the client will come with client hello. It will come with cipher suits. It will come with some kind of TLS version. Very first. Okay, this is the very first way. Then this request will go to whom? To the server, but obvious. Okay. In our case, if it is coming in between, then it can come to whom? F5 ASM. In that case, who is the server? F5 ASM. Once server will receive this request, they will negotiate about these TLS thing, cipher suits, blah, 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 whatever the best suitable, more secure, that will be get selected, and the TLS exchange will happen. Okay. Then client will check server validation. I hope you people are aware about रूट सीए क्या होता है ना, डीजी सर्ट से है, गूगल से है, क्या है, किससे नहीं, डिपेंडिंग अपॉन। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको मतलब लॉक दिखाई नहीं दे रहा, बट देर इज नो एरर ऑल्सो। लेकिन अगर यही सेल्फ साइंड होता और मेरा क्लाइंट मतलब मेरा ब्राउजर विच इज एक्टिंग एज अ क्लाइंट नाउ, मेरा क्लाइंट इसको नहीं जानता, तो यहाँ पर एक एरर आ जाती, एंड आई नीड टू एक्सेप्ट दैट रिस्क, राइट? समटाइम्स वी डू दैट, देन दिस थिंग हैपन। उसके बाद आपका जो सेशन जनरेट होगा वो पब्लिक की से होगा। अब क्लाइंट की वैलिडेशन होगी, सेशन की जो डिक्रिप्शन होगी वो प्राइवेट की से होगी। उसके बाद इट इज बिट लाइक अ मेथड कि एक्स, लेट अस अज्यूम एक्स इक्वल टू वाई, और बाद में हम एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जी कर देते हैं, तो एक की हमारी बनकर तैयार हो जाती है, दैट इज द मास्टर की। मास्टर की बनने के बाद कोई भी हमारी फर्दर कम्युनिकेशन होगी, दैट विल बी ऑन द सिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक यहाँ होती है और सिमेट्रिक यहाँ होती है। इन केस ऑफ एसिमेट्रिक, एज यू पीपल आर अवेयर, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। वी कैन नॉट गो विद द एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, बट somewhere it should be a symmetric thing, and that will be get created by its own purely mathematical calculations. It never gets shared over the sorry, internet, but they drive it, both of the parties drive it using some of the components. So that is how your encryption decryption works. Let me open a Wireshark. Okay, and let me open my website with that. Okay. आप ये देख रहे हैं यूडीपी, टीसीपी, दीज आर द प्रोटोकॉल। अच्छा, हम क्या यूडीपी पोर्ट, देखो यूडीपी पोर्ट 53 से देखते हैं, बिकॉज यू पीपल वर आस्किंग अबाउट द डीएनएस। कैन यू सी दिस गाइस? अब्दुल, you had a question about the DNS, right? Yeah. So देखो, these all are DNS, and what I am searching for, port 53, 53. right? Yeah. So you can see there are a lot of Yeah, but information possibility is there they may not have enabled or implemented DNS security, right? Sir, उन्होंने शायद DNS नहीं, security implement नहीं किया होगा. DNS security is something different case, Different, I but understand. It's more on the application side, but शायद right, उन्होंने. right. But if you see, But still, I when mean, it's एक question है, I still want to ask one question. What go is ahead, na? इसमें what is the advantage? See, DNS, I believe this request will not go through the WAF. It will go through the firewall. अच्छा देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही आप लोगों को बताया था कि So WAF work then on which layer?
Layer 7, yeah, that's what. है ना? So So it will not the add UD any value to DNS, right? when you are talking about UDP 453, what is the layer? Four. UDP, yeah, UDP is, Four. yeah, UDP 53, that's correct, yeah. So WAF is no value addition in case of your DNS secure. Okay. Hmm. Okay. Sorry, somebody else was also asking something. Kasip, were you asking something? No, sir. No. So where is Netminion? I wanted to show you some Netminion related data. Give me a moment. Okay, leave it. Let me maybe show you little. Array, okay. Are you aware about this protocol? What is this? Anybody? No. Abdul, Prasad, Samir. Very important. Huh? What is this? If somebody is Not aware. really, but we need to. I need to see the details. What is actually the full form and all? It's the short form, I think. Any overview? Like what is this? Okay, let me talk about it. If no, see, I am talking about quick. The name full form. It is an acronym for sure. Full form is quick. Then UDP. Then internet. Then connection. Okay, something a protocol developed by Google. And this is replacing your TCP plus TLS based web traffic. Whatever I was telling you ना कि आपका TCP रहता है then TLS होता है वो सब हटा रहा है. And this is somewhat is also named as maybe HTTP 3 जो आपका TCP पे बिल्ड ना होके कहाँ पर बिल्ड हो रहा है UDP. Why? बहुत फास्ट है. इट इज फास्टर हैंडशेक होता है आपका. मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, बेटर परफॉर्मेंस हो रही है, लो लेटेंसी, फास्टर कनेक्शन. ओके, इसीलिए अगर आप देखो तो यू कैन एबल टू सी देयर इज क्विक. सो 90 91 अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर कैन यू सी लोअर लेयर गाइस? व्हाट इज द लेयर? इट इज UDP. एबल टू सी? यस, नो, प्लीज. Yeah, we कैन can यू? see. Yes. दिस इज UDP. अपर क्या है? 443. TCP. राइट, इन केस ऑफ क्विक. लेकिन अगर आप बाकी देखो, जैसे ये देख रहे हो, तो फॉर श्योर इट इज नहीं, ये नहीं, कुछ और देखो. ये देख रहे हो तो व्हाट इज दिस? दिस इज TCP. लोअर लेयर देख पा रहे हो ना, TCP. तो यहाँ पर अगर आप ये देखोगे पूरा इट इज द TCP बेस्ड. राइट, लोअर आपका TCP चल रहा है. लेकिन इन केस ऑफ क्विक आपका अपर क्या है? 443. लेकिन लोअर लेयर क्या आ गई? UDP. So this is your UDP payload. You can able to, right? Quick connection information. So ये quick एक नया प्रोटोकॉल है. Although काफी दिनों से it is in picture, but yeah, this is the new stuff which is now in the market and it can be also in used. By the way, ये कोई TCP सर्वर हेलो कोई और पकड़ता हूँ. Let me check. हेलो 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 हेलो, जो मैं आपसे बात कर रहा था थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ. आई होप यू पीपल एंजॉय इट. ओके, सो ऑल्दो इट्स नॉट द बेस्ट टॉपिक बट यू शुड बी अवेयर अबाउट. So quick will add what value it will add? It's going on 443. नहीं नहीं, देखो क्विक भी एक प्रोटोकॉल ही है. लाइक आपका TCP प्रोटोकॉल है, TLS आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर. बट ये जो डेवलप्ड हुआ है ये बेटर परफॉर्मेंस के लिए डेवलप किया गया है गूगल से. ओके, जो आपका जैसे मैंने अभी आपको बताया इट विल वर्क ऑन UDP. तो मतलब ये कनेक्शन लेस होगा, है ना, बट इट विल बी फास्ट, वेरी फास्ट. Yeah, it will be fast. एंड दे आर यूजिंग अ लॉट But ऑफ थिंग्स. प्रोटेक्शन के लिए भी और कनेक्शन लॉस ना हो हमारा उसके लिए भी दे आर गिविंग मोर एंड मोर थिंग्स. सी इवेंचुअली अगर आप बात करो, पहले हमारा वाईफाई होता था, पहले क्या अभी भी है, हाफ डुप्लेक्स है, राइट. बट कितना फास्ट हो गया, राइट. धीरे धीरे बहुत फास्ट हो रहे हैं.
उसी तरीके हम्म से मतलब आपकी डिफरेंट डिफरेंट काम चलते रहते हैं। ओके, ताकि किस तरीके से आपके प्रोटोकॉल फास्ट हो जाए, लो लेटेंसी हो, परफॉर्मेंस फास्ट हो, फास्टर हैंडशेक हो, हम्म मल्टीप्लेक्सिंग भी हो जाए, तो दैट इज द थिंग। बट बाय द वे, one more thing come into the picture, SNI. What is this SNI, guys? Anybody? This is the topic of your LTM. No? Okay. Let me talk about SNI. Because ये सारी टर्म्स ना आपको पता होना चाहिए when you are working on it real time में, these things can come into your trouble shooting के वक्त, या कोई भी पूछ भी ले आपसे because you are securing their application, so they can ask. अगर मैं बात करूं तो अगेन इट इज एन एक्रोनिम जो स्टैंड करता है सर्वर नेम इंडिकेशन पे। अगर लेमैन टर्म में मैं आपको बात बताऊं तो इट मींस कि अच्छा, ये सेटिंग मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर हम यूज करते हैं। एक ही सर्वर पे LTM के केस में जब आप डिफरेंट एप्लीकेशन डाल, ओके, तो आपका जो सर्टिफिकेट है, जब आपकी रिक्वेस्ट आई वर्चुअल सर्वर, अब IP एक ही है सर्वर की, एप्लीकेशन डिफरेंट, ओके, अब वो जो नेम लेकर आएगा, नेम बेसिस पर ये एप्लीकेशन को आंसर करेगा। अब SNI जो है वो चेक करता है कि मुझे कौन सा सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना है टू माय क्लाइंट, बिकॉज अब क्या है, डिफरेंट आपके पास सर्टिफिकेट्स है, राइट, बट इट इज वर्किंग ऑन द शेयर्ड होस्टिंग लाइक CDN इन्वायरमेंट, IP इज द सेम, है ना, बट योर एप्लीकेशंस आर डिफरेंट, तो उस केस में SNI कम इनटू द पिक्चर। और जब SNI आता है, इट इट सेज दैट ओके विच सर्टिफिकेट आई नीड टू प्रेजेंट। सो जब आपको एक वर्चुअल सर्वर पे डिफरेंट SSL प्रोफाइल लगानी होती है, इन केस ऑफ LTM की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी आप SNI फीचर को इनेबल करते हो। लेट मी शो यू, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, how to enable multiple certificates on virtual server. I think you need to go to SSL proper and need to enable SNI there and See, this is the interview question also. आपका मैंने ये मैंने वीडियो बनाई थी कुछ साल पहले, अरे 4 साल हो गए, गुड। तो यू कैन सी, है ना, इफ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, मैं आप सभी को लिंक भेजता हूँ। तो एक SSL प्रोफाइल पर, मतलब मोर देन वन SSL प्रोफाइल अगर आपको लगानी है वर्चुअल सर्वर पर, तो वो कैसे लगा सकते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप यूजिंग द लैब आपके सबके लिए बनाई हुई है। ओके, यू कैन चेक एंड यू कैन जस्ट learn over there, you can put your comments also, it is the very important settings by the way। okay, so this is SNI। तो यहाँ पर जब हम यहाँ चेक कर रहे थे, तो SNI में आप देख रहे हो इट इज टॉकिंग अबाउट कि ठीक है, दिस इज द वेबसाइट, दिस इज द होस्ट नेम, तो मुझे इस होस्ट नेम से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वो देना है। ओके, और यहाँ पर आप ना डिफरेंट SNI चेक भी कर सकते हो। मैं देखता हूँ SNI का कुछ फिल्टर है क्या। ओके, मे बी आई नीड टू लुक अपॉन TLS, ये लेट मी चेक, हियर यू गो, कैन यू सी, यहाँ पर जब मैंने अपना क्लाइंट हेलो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो दिस रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम और द SNI, दिस दैट इज माय वेबसाइट विच इज netminion.com and it is working on TCP so it's not using quick, well, the lower one is using quick also, okay, maybe, but yeah, that is how our traffic works. Okay, not related to the ASM, but I hope there should not be any question. You should be aware about these things, very basic things, and you should be aware about these things. Any question, by the way, so far? Yeah, I Any have one question? question. So this SNI is it's basically for WAF, right?
I'm sorry. And is it identification or indication for a WAP or for a certificate? Like there'll It be a is no. certificate attached See, to it is server name indication, and server name it will node come into node. the picture. It will come into the picture when you are hosting multiple secure website and they have their own unique SSL or TLS certificates, but same IP, single IP. Okay. Okay, single IP. Okay. Yeah. Oh. So without SNI, during your initial TLS handshake, when client will try to initiate with the IP address, but it is not aware ना कि कौन सा मुझे certificate देना है. Let us say you Oh, have same IP. netminion.net, you have blog.netminion.net, you have video.netminion.net on the same server, है ना? तो अब it is not aware कि okay which server I should be presenting during this client hello. Okay, so इसके that लिए is we the have to हमको separate service SNI की enable करनी होती है और by default it's enabled on the WAF or नहीं 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 it's not a WAF feature. It is again as I told you LTM feature है. और जो मैंने लिंक आपको दिया है ना, check out that link. अच्छा You will okay okay able to learn a lot over there. मैंने लैब भी बना के दिखाई है इसकी. Okay, so you will feel good. Just you will learn something new, and that is important by the way. Okay. Okay, let's go. So मैं जल्दी से एक दो चीज और बात करता हूँ क्योंकि अभी जनरी की हम बात कर रहे हैं. अभी हमारा स्टार्ट जो हुआ है इस पे उसी के बारे में बात कर रहे हैं. कॉम्प्लायंसिस. देखो एएसएम को लगाने का एक और बिग रीजन जो है, organization want to meet some standards or some kind of compliance requirement is there for their application, maybe because of wide range of attacks or maybe because of different industry. Like if you have heard about PCI DSS, have you? पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है ये आपका. was one of the most prominent compliance supported. FIASM provide all the feature to directly address several of PCI DSS requirement, जैसे आपका protecting your web application from the common attack, जिसके अंदर आपका अगेन जो मैंने एग्जांपल दिए थे एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ब्ला ब्ला ब्ला. तो यहाँ पर एएसएम आपका पीसीआई रिपोर्ट भी जनरेट करके देता है. दैट आई विल शो यू व्हेन वी विल गो फर्दर इन आवर क्लासेस. बट देन वेरी फर्स्ट थिंग, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लायंसेस आपकी कुछ कंपनियां वैफ पर जाती हैं एंड द मोस्ट डिमांडिंग इज F5. देन देयर इज वन मोर compliance. If you have heard about HIPAA, HIPAA maybe you can say, ये जो compliance है, this is used by your health insurance companies. हाँ? तो हेल्थ सेक्टर में जो भी है, they are getting means their application need to be get protected by this kind of compliance. So again, for the same, you can use F5 ASM. Then there are lot of compliance, like you have heard about GDPR. It is PR or R, maybe PR, yeah. तो GDPR जो आपका है compliance, it F5 ASM assist for this compliance also by protecting the personal data, है ना? Like डाटा इनक्रप्शन है आपका, बोर्ड डिफेंस है, सेफ गार्ड करता है ये सेंसिटिव डाटा को और प्रिवेंट करता है डाटा ब्रीचेस को. तो एफआई ओन सर्विस आर आल्सो स्ट्रक्चर्ड टू बी जीडीपीआर compliant so that your data processor for its customer it is protected. And there are more standards like Basel 1, Basel 2, okay, SOX, lot of there, but these are the main, players जहां पर you need to be aware of like how F5 ASM works. दूसरा अगर मैं बात करूं, it will be our topology, okay. So today I don't want to touch more of the topics. Let's start tomorrow. But before that, I wanted to talk about my topology. यहाँ पर अगर आप देखो देर इज ASM, ओके. ये सारी की सारी यूनिट्स ना जो हर एक डिवाइस है, एवरी सिंगल डिवाइस वी विल बी गोना कॉन्फ़िगर फ्रॉम द स्क्रैच. जस्ट FYI, डोंट वरी.
I will be going to talk about all the labs components and the even the IP address and everything from the scratch. So here you can see there is a vulnerable application, और ये वही vulnerable application है which you can able to see in the lot of videos presented by F5 itself. Okay, they are using this website, PHP auction website इसको बोलते हैं, vulnerable website है आपकी. यहाँ पर हम attacks करेंगे, SQL injection attack, blah blah blah, whatever. Okay, we will be doing a lot of attacks over there. Then हम ट्रैफिक को भेजेंगे यहाँ पर और यहाँ से दोबारा अटैक करने की कोशिश करेंगे. And every attack should be stopped on the ASM. And if it is not getting stopped, उसके लिए हमें पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, ट्यून करना पड़ेगा. ओके, देयर इज समथिंग नेम्ड एज ट्यून, विच मींस पॉलिसी को इस तरीके से बनाना कि वो अगर कोई भी मेरी वनरेबिलिटीज है उसको लर्न करे और हमें असिस्ट करे कि दैट वनरेबिलिटी शुड बी स्टॉप्ड ऑन द ASM. इट शुड नॉट गो टू माय सर्वर. So we will be doing a lot of things. We will be discussing about WAPs also, but not now. Okay. For today, I need to conclude the session here. But yes, if there are any questions, feel free to ask them. Okay. I am here to help you all. Any question, guys? No? Apart from it, just for your information, कोई भी सेशन होगा, that session will get recorded. Okay, every session including this session is getting recorded. It will be get uploaded to our website. Bit like जैसे आप Udemy यूज करते हो, एक पोर्टल है, you will get the access of that portal and through the app also, like Android app or Apple whatever iOS you are using, you can access these videos. So अगर maybe because of any reason you are maybe busy with some migration or somewhere else, you can even check the recording of the class, okay, later on. So these all stuff you will be received from us. Yes, house is open for the question. Then timing you are aware of, okay, and it will be Saturday and Sunday class. Yes, Prashant, go ahead. How about the lab actually? Lab setup, The lab practice, like we need to. lab practice. So we need to install on our probably laptop. you can install on your laptop, okay. Else you can use Netminion server also, but it all depend upon the commercial and about what kind of services you are buying from us. Okay, so depending upon that, you can maybe join on our server, or if you are not opting for the same, probably you can use your server. I am sharing the lab, like how it need to be built from the scratch. It's very easy. You can build by your own. Okay. So again, So the F5 image will be provided by you. Won't go in the detail for the commercial. That maybe Myra ma'am will take this up with you. Okay, but yeah, you can opt in any of the services. Yeah, I have my own computer with me, so just I need an image of ASM, so that's only required for me. Yeah, you can use your compute, or maybe you can spin up over the Azure if you want, or maybe any of the cloud. I will say. Okay, howsoever maybe you want to use, you can. So you help us in providing the image, right? I mean, like F5 ASM image. This is free. You can download it by your own. Everything is free. Whatever I am using here, everything is free. Everything is available. No dependency. Okay. Any image you can download. It will not ask anything. No maybe special credentials or special rights is required. I mean, I heard recently that F5 changed the policy and they are not allowing to download now. I mean, if I'm not wrong. Sorry? If I'm wrong. I mean, I heard that recently F5 has changed the policy and they are not allowing us to download the images. Images? I don't think so. Is this maybe Kasim, Abdul, Sabir? Have you experienced something? I don't think so, Prashant. Okay. Yet no. No, you can download. Actually, I have for 90 days trial. Yeah, downloaded. Yes, you can download. Yes. Okay then. Yeah. You also get a license from your if you apply it from your official ID or something like that.
True. That is one change. Yes. If you are referring to that, now you cannot use that Gmail, Hotmail, or blah blah blah. Yeah, that's what You need to go with your official website. That is one change. Yes, I do it. Okay. So you need to use your official website, but everything is then free. Okay. They will not ask any question. And that is true also because Sure. people are misusing their these kind of accounts. So that's fine. That is for security. Got it. Okay, Thank you. gents. Got it. Yeah, thank you. Yeah, if no questions, and even if you will not receive, I can ask the team. They will help you out. Don't worry. Okay. I will ask them. Okay. If there is any question, please feel free to ask. Anyone? No. No? No. Sure. No. Thank Then let's meet tomorrow at the same time. Okay. Thank you. Great day. Take care of You. yourself and your family. We'll meet you tomorrow.